So today we are going to start with a topic, fresh topic, that is face. Face is also called as counter-nascence. And what is the extent of face? So superiorly, where your hairline is starting at that point, this point, superiorly it is the hairline, inferiorly it is the chin, and this is the base of the base of mandible. On sides ears are there, and these are the boundaries of face. Now this forehead, okay, this is a common area for both face and scalp. Now face consists of two layers, that is skin and superficial fascia. The important point to note here is फेस में डीप फेशिया एब्सेंट होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बहुत क्वेश्चंस बनते हैं. फेस में डीप फेशिया एब्सेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? सुपरफिशियल फेशिया. और इसी सुपरफिशियल फेशिया में मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस प्रेजेंट रहते हैं. बिकॉज योर फेस इज वेरी एक्सप्रेसिव, ओके, दैट इज व्हाई डीप फेशिया इज एब्सेंट एंड द मसल्स ऑफ फेस दे आर प्रेजेंट इन सुपरफिशियल फेशिया. अब डीप फेशिया पूरे फेस में एब्सेंट होता है, but it is present at two places. First is over the parotid gland. Ear के आगे यहाँ पे we have parotid gland. So this parotid gland, it is covered by parotid fascia. तो ये parotid fascia जो है ये है deep fascia. And over a muscle which is called as buccinator. वहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है? It is present in the form of buccopharyngeal fascia. सो फेस में दो लेयर्स होती हैं, स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया. इसी सुपरफिशियल फेशिया में मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशंस प्रेजेंट रहेंगे एंड डीप फेशिया विल बी एब्सेंट. नाउ व्हाट आर द peculiarities ऑफ स्किन ऑफ फेस? फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस इज highly or richly supplied by blood vessels. Therefore, it is highly vascular. So, first point is it is highly vascular. Now, अगर कोई चीज highly vascular है, तो अगर फेस में कोई इंजरी होती है, कोई वूंड होता है, तो it will bleed heavily, it will bleed profusely. But यही रीजन है कि अगर हम कोई सर्जरी करते हैं, so results are very very excellent. That is, अगर हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो ब्लड सप्लाई बड़ी अच्छी रहती है, तो सर्जरी इज अ सक्सेस. प्लास्टिक सर्जरी इज अ सक्सेस ऑन फेस. Second, it is having sebaceous gland and sweat gland. Sebaceous glands and sweat gland. Young people जिनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, you can make it out because these glands are more, they are having a problem of acne. They are having a problem of acne. Then laxity. Then laxity. Skin जो है आपकी फेस की easily मोबाइल रहती है, okay? फिक्स कहाँ पे होती है? इट इज फिक्स जहाँ पे अंडरलाइंग कार्टिलेजेस या बोन्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज फिक्स्ड ऑन नोज. नोज में बहुत सारे कार्टिलेजेस होते हैं. एंड ईयर, बोथ ऑफ देम दे आर हैविंग अ कार्टिलेज, देयरफॉर द स्किन इज फिक्स्ड. अब यहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो दैट इन्फेक्शन इज वेरी वेरी पेनफुल. एंड अगर हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व रहता है तो दैट इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज बॉइल. As we know, the skin is having an elastic property, therefore it is elastic in nature. And since deep fascia is absent, the facial, it is along with the skin and superficial fascia, the mobility is present. The mobility on the skin of the face is present. So these are the peculiarities of skin of face. Next we have seen below the skin we are having superficial fascia. Superficial fascia में हम देख चुके हैं कि muscles of facial expressions present रहती हैं. अब जहाँ पे भी मसल है वहाँ पे क्या रहेगा? वहाँ पे ब्लड सप्लाई होगी और वहाँ पे नर्व सप्लाई होगी. तो सेकेंड, इट कंटेन्स नर्व सप्लाई एंड ब्लड वेसल्स. एंड लास्ट, it contains some amount of fat. It contains some amount of fat. So we are having skin. We have studied peculiarities of skin. In second slide, we have seen the peculiarities of superficial fascia. Now implication part, clinical integration or applied anatomy of both these things. So first, there is a blushing on the face. You can make it out कि face blush करता है. Why? Because of blood vessels dilate हो जाती हैं. And another thing is, most important point is, it is highly vascular. Therefore,
It therefore there is a blushing of face and blanch with expressions, and there is also response to exposure of cold. Second, wound. कोई भी वुंड होता है सो इट हील्स रैपिडली. क्यों हील रैपिडली करेगा? क्योंकि ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है फेस की. देयरफॉर इट हेल्प्स इन अर्ली और रैपिड हीलिंग ऑफ फेशियल वुंड्स. एंड दिस पार्ट, हम इस पार्ट को कहाँ पे यूज करते हैं? दिस इज यूटिलाइज्ड फॉर प्लास्टिक सर्जरी. Third point, acne. As we know, it is having a lot of faces, having a lot of sweat and sebaceous glands, and if there is an infection in young person, so there is an acne. Mainly it occurs on the face of young adults. और क्यों होता है पिंपल? Because of clogging of hair follicles. और hair follicles के वहाँ clogging hair follicles की होती है तो साथ में sebaceous gland भी block हो जाता है. Next is edema of face. Edema of face. You can see edema of face very well and clearly. सबसे पहले जो रीनल एडिमा रहता है that appears first at eyelids. हमें बहुत क्लियर कहाँ पे दिखाई देता है? eyelids. आप देखोगे लोअर eyelids जो है वहाँ पे swelling आ जाती है, puffiness आ जाती है, and later to the other body parts. Now boil, you can see in this diagram, this is a diagram of boil. This is an infection of hair follicle. This is an infection of hair follicle. Okay, and they are very very painful. ये कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे skin बहुत fixed रहती है cartilages से. Due to action of muscles of facial expression, wound of facial skin tends to gap. अगर कोई इंजरी होती है, आपका फेस मूव करता है एक्सप्रेशंस के साथ, इसीलिए वो वहाँ पे गैप आ जाता है. ओके, देयर इज अ गैप in that. Now muscles of facial expression, they are inserted, they are present in superficial fascia and they are inserted onto skin of fascia. Important thing is fat. Fat is absent in eyelids. But whereas you can see particularly in children over the cheek, this buccal pad of fat is present. और infants में काय के लिए use होता है? This is called as suctional pad. Okay, and this is prominent in infant. It helps them in suckling of milk. It helps them in suckling of milk. Now cleavage lines of skin in the face. These cleavage lines, they are also called as Langer lines of the skin tension. Okay, these are Langer lines of skin tension. ये कहाँ पे present रहती हैं? Topographically, these lines are produced due to parallel orientation of collagen fibers in the dermis. तो स्किन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कोलेजन फाइबर्स. ओके, स्किन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? कोलेजन फाइबर्स. और उसके नीचे मसल्स रहती हैं. तो जब मसल्स में टेंशन प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से these collagen fibers which are present parallel to each other, they are on the skin seen as Langer lines. इसका हम डायग्राम देखते हैं. ये देखो, this is the way of arrangement of collagen fibers on the face and these are Langer lines जो आपको दिख रही हैं. Now next is natural wrinkles. Natural wrinkles. Natural wrinkles किस में common रहते हैं? You very well know they are more prominent in elderly people. Why? Because the elasticity of skin is lost. Because the elasticity of skin is lost. Therefore, natural wrinkle lines are very well seen in elderly people. Now clinical importance, to excise lesion of skin, that is the lesion कौन कौन से present रहते हैं? स्किन पे कोई स्कार मार्क प्रेजेंट है, कोई पिगमेंट पैच प्रेजेंट है या स्किन कैंसर है. इंसिजन तो दिया जाता है, वो दिया जाता है नेचुरल रिंकल लाइन के अलोंग और क्लीवेज लाइन के अलोंग. व्हाई? बिकॉज फेस पे अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो कोई भी नहीं चाहता कि फेस पे स्कार मार्क दिखे, इसीलिए अलोंग दीज लाइन्स हम करते हैं so that less scarring is seen. So this is the implication part of cleavage lines and natural wrinkle lines. Now some peculiarities of facial expression of muscles. कुछ उनकी जो peculiarities हैं. Muscles of facial expressions. First point, हमने देखा था they are present in superficial fascia. इसलिए ये superficial fascia कहाँ पे present रहता है? Just below the skin. That is why first point, they are subcutaneous.